बायोकेमिस्ट्री 2 के कुछ बेसिक मोस्ट रिपीटेड BCQs हैं ये, तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसका लिंक कॉपी कीजिए और उसका जो है वो ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए और चलते फिरते इस ऑडियो को सुनते रहिए। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये इसके जो सही आंसर्स हैं वो आपको जब आप पेपर देखेंगे तो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी एक टेक्निक है पढ़ने की। और अगर आप वैसे वीडियो देखकर पढ़ना चाहें या वीडियो को जगह जगह पॉज करके BCQs नोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Amino acids are joined by peptide bond. The primary structure of protein represents a linear sequences of amino acids joined by peptide bond. Peptide bond is rigid with the partial double bond character, planar, covalent. So all of them are right. Enzymes are proteins. The first molecule protein in sequence by the first protein is sequenced by Frederick Sanger is insulin. A dipeptide has 2 amino acid and 1 पेप्टाइड बॉन्ड, यानी 2 अमीनो एसिड के बीच में जो एक बॉन्ड बना हुआ है उसकी वजह से तो हम उसको डाइपेप्टाइड बोल रहे हैं ना। तो डाइपेप्टाइड हैज़ 2 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विद टर्शियरी स्ट्रक्चर। fibrous proteins such as silk fibrin consist of polypeptide chain arranged in beta plated sheet. A helix has 3.6 amino acid residue per turn. Tertiary structure is maintained by peptide bond, hydrogen bond and disulfide bond, all of them. Hemoglobin has quaternary structure. Disulfide bond are formed between crystalline residue that are close together. The 3D structure of protein can be determined by nuclear magnetic resonance and X-ray crystallography. So both A and B. Amino acid used to build protein in cells can be distinguished through side chain of R groups. Withdrawn ions are crystalline, solid, soluble in water, amphoteric. So all of them are right. Side chains can be acidic, basic, neutral, all of them. Non-polar chains in amino acids includes VAL, valine. When small amount of acids or bases are added to the withdrawn ion, it resists a change in temperature. It resists a change in pH. Okay. The isoelectric point of an amino acid is defined as the pH, where the molecule carries no electric charge. An essential amino acid is one that the body cannot synthesize. L-alanine are technically known as L-alanine are technically known as nantomers. Non-polar side chains in amino acids include VAL, valine, जो हमने पीछे पढ़ लिया था. Which of the following is a non-standard amino acid? यानी स्टैंडर्ड की अमीनो एसिड नहीं है. हाइड्रोक्सीप्रोलिन. Amino acids required in a human diet and not synthesized by the body are called essential. Now the sequence of letter W, Y, Q, N will represent tryptophan, tyrosine, glutamine and asparagine. Okay. Which of the following statement about solution of amino acid at physical pH is true? All amino acids contain both positive and negative charge. All the following amino acids contain only methyl or methylene groups as constituent of their side chain except glycine. Which of the following amino acid is ketogenic but not glycogenic? It's leucine. Since the pK value of aspartic acid are 2.0 or 3.9 and 10.0, it follows that the isoelectric point is 3.0. In the disease called scurvy, post-transitional modification of protein does not result in the formation of hydroxyproline. The thyroid hormone thyroxine T4 is derived from tyrosine. All of the following statements regarding the level of protein structure are true except primary structure of amino acids sequence. Read from the
carbo terminal to the amino terminal. Lactation of disulfide bridge of if any. सो ये वाला सही है, और ये बीच में पॉज करके सर्च करके आई हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस रीड फ्रॉम द कार्बोक्सी टर्मिनल. ठीक है ना, ये वाला सही है. All of the following statement regarding the denaturation of protein are correct except no protein can be denatured once denatured by high concentration of urea. हो गया. थोड़ी सी इसके अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी आएगी क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है वो भी. द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज मैमल इज़ कोलाजन, और सबसे अबंडेंट भी होती है और सबसे ज़्यादा ज़ाया भी यही होती है. मैं आपको बता दूँ डेली बेसिस पर. और ज़ाया इसलिए होती है कि हम जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये कम होती जाती है. तो जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा है उसमें कोलाजन उतना ही कम है, पर है ज़रूर. मार्फन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अ म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग ऑफ फिब्रिलिन. Ehlers-Danlos syndrome is due to the deficiency of type 3 collagen. The angle between alpha carbon and nitrogen is pi angle. Which bond restricts polypeptide chain rotation? Peptide bond. Alpha helix per turn distance is called a pitch. अल्फ़ा हेलिक्स का हर टर्न के ऊपर जो डिस्टेंस होता है टर्न, हम उसको कहते हैं. दो शीट बनी हुई होती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस की ना, उसको हम टर्न कहते हैं. तो उसका जो हर टर्न है उसका एक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि पिच है. अगर आप सिर्फ VCQs नहीं पढ़ते, थ्योरीज भी पढ़ते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी. अल्फ़ा हेलिक्स पर टर्न डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच. टू प्लेटेड शीट जॉइन टुगेदर स्पेशल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्न. ठीक है, इसको हम टर्न कहते हैं. मार्फन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं फिब्रिलिन. ऑल प्रोटीन कंटेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. In non-competitive enzyme activity inhibition, inhibitor does not affect Km. On the third day of onset of acute myocardial infarction, the enzyme elevated its serum LDH. A good example of suicide inhibition is allopurinol. The induced fit model of enzyme action is proposed by Koshland. In acute pancreatitis, the enzyme raised in first 5 days is serum amylase. Enzymes which are produced in inactive form in living cells are called proenzymes. Inactive form में living cells के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं हम उनको proenzymes कहते हैं, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, pro हैं, inactive हैं. Keratin kinase is present in all of the following except liver. The two sugars which differ from one another only in configuration around a single carbon atom are termed as epimers. The most important epimers of glucose is galactose. Sucrose consists of glucose and fructose. GF से मिलके सुक्रोस बनता है. ठीक है, तो इस तरह याद हो जाएगा. Bile salt deficiency cause कॉलीलाइथियासिस. अच्छा, बीच में पॉज होता है ना वीडियो, तो समझ जाया कीजिए कि जिस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लगती है मैं इसको वीडियो को पॉज करके उसको चेक करके आती हूँ. ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है. आइकोज मीनिंग 20. द बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड. अ pyrimidine nucleotide is CMP. Catalase ligation or joining of two substrates is called ligase. Arachidonic acid has 20 carbon with 4 double bond. A nucleoside consists of a nitrogen base linked by a glycosidic bond to carbon 1 of a ribose and deoxyribose. ठीक है, कार्बन 1 पे होता है. The nucleotide in nucleic acid are joined by phosphodiester bond. Pellagra occurs in population dependent on maize. Folate is essential for normal cell division. इसलिए आपको पता चला होगा कि folate जो है वो
फॉलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह प्रेगनेंसी में क्यों खिलाते हैं फीमेल्स को, ताकि सेल डिवीजन प्रॉपर हो और कोई पार्ट अंडर डेवलप ना रह जाए। ड्यूकोमेरॉल इज़ एंटागोनिस्ट टू मिनाडेओन यानी विटामिन के। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर इन द बायोजेनेसिस ऑफ vitamin D. Wilson's disease is a condition of toxicosis of copper. Iodine fort is required in human body is for formation of thyroxine, यानी सॉल्ट हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप कि आपने इसका ऑडियो लिंक कॉपी कर लिया होगा और उससे इसको पढ़े होंगे, बिकॉज़ आपने अगर जो है वो मेमोरी का मैकेनिज्म पढ़ा हो तो हम जो है वो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड की सुनते हैं। और अगर आप इसको देख लेंगे ना एक दफ़ा, तो जब आपके सामने पेपर आएगा और इसमें से भी कोई क्वेश्चन उसमें लगा, क्योंकि ये अराउंड 317 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से ऑब्वियसली 60-70 तो लगते ही हैं और पेपर ही 60 से 70 पेपर्स का MCQs का होता है। तो आप जो सही आंसर्स जगा देंगे, उम्मीद है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे इंस्टा पर या मेरे फेसबुक पर जो है मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वैसे मुझसे चाहिए बायोकेमिस्ट्री के, एर्गोनॉमिक्स के, बायोमैकेनिक्स के, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के, तो फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।